Hi, good morning children. Welcome back to my YouTube channel called Knowledge World. I, Benazir Shahid, would like to explain you about time. So, where we can see time? In clock. Do you recognize what is this? This is called clock. And this clock is called analog clock. So, there are two types of clock, analog clock and digital clock. Analog clock you can see at your home, school, bank and many other places. And digital clock, where you can see digital clock? Digital clock you can find at railway station, police station, metro station and many other places. So, now we have to focus in analog clock. This clock is called analog clock. Can you see this? This short hand is called hour's hand. This short hand is called hour's hand. And the long hand is called minute hand. Long hand is called minute hand. Short hand is called hour's hand and long hand is called minute hand. And this arm's hand is called second hand. This is called second hands. So, suppose, for example, now this is a clock made by me. So, suppose this short hand means our hand is on 1 and minute hand means long hand is on 12. So, what we call? What is the time now? So, the time is 1. Can you see 1? Because short hand is on 1 and short hand is called hour's hand. So, 1:00 because minute hand is in 12. So, this is called 1:00. Suppose our short hand means our hand is in 2. So, can you tell me what is the time now? The time is 2:00 because the short hand is on 2 and the long hand is on 12. So, this is called 2:00. Suppose the hour hand means short hand is on 3 and the long hand is on 12. So, what is the time? The time is 3:00. If the short hand is on 4, so the time will be 4:00. If the short hand is on 5, the time will be 5:00. Now, if the short hand means our hand is on 6, so what will be the time? The time will be 6:00. Means the time is 6. Now, suppose if the short hand is on 7 and the long hand is on 12, so what will be the time? The time will be 7:00. Suppose the short hand is on 8 and the long hand is on 12, the time will be 8:00. Likewise, if the short hand is on 9 and the long hand is on 12, the time will be 9:00. And if the short hand is on 10 and the long hand means minute hand is on 12, the time will be 10:00. If the short hand is on 11 and the long hand is on 12, the time will be 11:00. If the short hand is on 12 and the long hand is on 12, then what will be the time? The time will be 12:00 because the short hand is also on 12 and the long hand is also on 12. Both the hand is on 12. So, the time will be 12:00. For example, now, can you tell me what is the time now? If the short hand is on 4 and the long hand is on 12, so what will be the time? Can you please tell me? The time will be 4:00. Suppose if the short hand means our hand is on 8 and the long hand is on 12, so what will be the time? The time will be 8:00 because short hand is on 8 and the long hand is on 12. Suppose if my short hand is on
hand is on 12. So what will be the time? Time will be 5 because shorthand indicate what? Number 5. So the time will be 5 o'clock. Suppose our shorthand is on 11 and the longhand is on 12. The time will be 11 o'clock. So now is it clear to you how you're going to know the o'clock? O'clock means what? If the shorthand is on any number, the time will be that o'clock. Like if the shorthand is on 8 and the longhand is on 12, the time will be 8 o'clock. If the shorthand is on 2 and the longhand is on 12, the time will be 2 o'clock. Now, do you know what this 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 means? This means 1 means 5 minutes, 2 means 10 minutes, 3 means 15 minutes, 4 means 20 minutes, 5 means 25 minutes, 6 means 30 minutes, 7 means 35 minutes, 8 means 40 minutes, 9 means 45 minutes, 10 means 50 minutes, 11 means 55 minutes, and 12 means 60 minutes. So 60 minutes make 1 hour. Suppose my short hand means our hand is on 1 and the long hand is on 1. So what will be the time? The time will be 1 past 5. Means what? Or 5 past 1. Means time क्या हो रहा है? Time 1:05 हो रहा है. 5 past 1 मतलब 1:05 हो चुका है. Suppose short hand is on 1 and the long hand is on 2. So what will be the time? 10 past 1. 10 past 1. Why 10 past 1? Because the minute hand is on 2 and 2 means 10 minutes. So the time is 10 past 1. Now if the short hand is on 1 and the long hand is on 3, then what will be the time? Quarter past 1. Why quarter past 1? Quarter means 15 minutes. Quarter means 15 minutes. So the time is 15 minutes past 1 or quarter past 1. मतलब 1:15 हो रहा है. Now, if the short hand is on 1 and the long hand is on 4, so what will be the time? 20 past 1. Can you tell me why every time we are calling 1, 1, 1? Why not 2? Why not 3? 20 past 1, quarter past 1, 10 past 1, 5 past 1. Why we are calling 1, 1, 1 all the time? Because our short hand is on 1 and the long hand is on 4. That's why we are calling 5 past 1 or 10 past 1, quarter past 1 or 20 past 1 because our short hand is on 1. And this is the place where this is the long hand where we can placing the minutes. Like suppose if the short hand is on 1 and the long hand is on 5. So what will be the time? 25 past 1. Why 25 past 1? Because long hand is on 5 and the short hand is on 1. So this is called 25 past 1 or 25 minutes past 1. Actually this is minutes. These odds are minutes. So 25 minutes past 1. Suppose if our short hand is on 1 and the long hand is on 6, then what will be the time? Can you please guess? The time will be half past 1. Half past 1 means what? देखिए आप देख सकते हैं इस क्लॉक में 12 नंबर्स है. सो 12 का हाफ क्या होता है? 6. ये आप लाइन देख रहे हैं, ये 6 क्या होता है? हाफ.
और हम लोग को पता है कि 60 minutes make 1 hour. So 30 minutes means what? Half hours. So 30 minutes means what? Half hours. That's why we are calling this half past 1, because now the time is 1:30. 1:30. So this is why we are calling half past 1. Suppose now if the short hand is on 1 and the long hand is on 7, so what you will call? 25 minutes to 2. Why 25 minutes to 2? इसलिए क्योंकि 25 minutes बाकी है 2 बजने को. जैसे कि देखिए हम लोग काउंट करते हैं 5, 10. Suppose this is 25 minutes to 12 means 2, because 25 मिनट बाकी है 2 बजने को. तो चलिए काउंट करते हैं 5, 10, 15, 20, 25. मतलब 2 बजने को 25 मिनट बाकी है. यहाँ पर हम लोग क्या काउंट कर रहे थे? यहाँ तक ये बोले कि 1:05 हो रहा है, 1:10 हो रहा है, 1:15 हो रहा है, 1:20 हो रहा है, 1:25 हो रहा है और 1:30 हो रहा है. लेकिन जब हम लोग ये हाफ पोर्शन क्रॉस कर दिए, उसके बाद ये वाले पोर्शन में आए हैं अदर हाफ में, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि 2 बजने को 25 मिनट बाकी है. 25 minutes to 2, मतलब 25 minutes अभी बचा हुआ है 2 बजने को. Suppose if our short hand is in between 1 and 2 and the long hand is on 8, so what will be the time? The time will be 20 minutes to 2. 20 minutes to 2 means what? 2 बजने को 20 मिनट बाकी है. 20 मिनट कैसे? 5, 10, 15, 20. तो 2 बजने को 20 मिनट बाकी है. Suppose if short hand is on 2 and the long hand is on 9, so what will be the time? The time will be 1:45. Quarter to and quarter past means what? And quarter to means what? Quarter past means 15 minutes already passed. And quarter to means 15 minutes left. How 15 minutes left? Let's count. 5, 10, 15. 15 minutes to 2. 2 बजने को 15 मिनट बाकी है. So quarter past means 15 मिनट बाकी है. कितने बजने को? 2 बजने को. Now if the short hand is in between 1 and 2 and the long hand is on, means minute hand is on 10, so what will be the time? The time will be 10 minutes to 2. मतलब 2 बजने को 10 मिनट बाकी है. 2 बजने को कितना मिनट बाकी है? 10 मिनट बाकी है. Suppose if long hand means minute hand is on 11 and the short hand is in between 1 and 2, so what will be the time? The time is going to be 5 minutes to 2. मतलब 2 बजने को 5 मिनट बाकी है, क्योंकि only 5 minutes left for being 2. So 2 बजने को 5 मिनट बाकी है. अब सपोज कीजिए कि शॉर्ट हैंड 2 में है और लॉन्ग हैंड 12 में है, तो टाइम क्या होगा? द टाइम विल बी 2 o'clock, बिकॉज the hour hand is on 2 and the minute hand means long hand is on 12. So the time will be 2 o'clock. Now, let us revise first. 5 past means 5 minutes past. 10 past means 10 minutes past. Quarter past means quarter means 15. Because 1 hour makes 60 minutes. In 60 minutes equals to 1 hour. So, quarter past or quarter hour means 15 minutes. So, because 1 is 5, 2 is 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. So, this whole clock means if minute hand from 12 goes to 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. If it complete one full rotation of the clock, means the clock completes 60 minutes, and 60 minutes equals to 1 hour. So this is, now tell me what is the time. This is, if the shorthand is on 2 and the longhand is on 12, can you please tell me what is the time? Please write in the comment section. So the time is 2 o'clock. Now if the shorthand is on 2 and the longhand is on 1, so what will be the time? The time will be 2, what will be the time? 2:05 or 2:05. The time is called 2:05. 2:05 मतलब 5 मिनट पार हो चुका है, मतलब 5 मिनट क्रॉस कर चुका है, 2:05 हो रहा है। आप लोगों को पता है कि जब हम लोग मम्मी से पूछते हैं कि मम्मी टाइम क्या हो रहा है, या पापा मम्मी से पूछते हैं कि टाइम क्या हो रहा है, तो मम्मी कभी बोलती है अभी 2:05 हो रहा है, या अभी 4:05 हो रहा है, या 4:20 हो रहा है। तो ये बजकर ये इसका क्या मतलब हो रहा है कि 4:20 हो रहा है, ये 5 बजने को 20 मिनट बाकी है। तो ये 4:20 और 5 बजने को 20 मिनट बाकी, ये क्या हो रहा है और होने वाला है। सो हो रहा है मीन्स, या हो गया है पास्ट, मतलब वो बीत चुका है। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है 2 मतलब होने वाला है। सो 5 minutes past 2. If the short hand is on 2 and the long hand is on 2, the time will be 10:02. Why 10:02? क्योंकि अभी छोटा वाला भी जो हैंड है, मीन्स शॉर्ट हैंड जो है वो भी 2 पे है, और लॉन्ग हैंड जो है वो भी 2 पे है। तो टाइम क्या हो रहा है? 2:10। अब ये छोटा वाला 2 पे है और बड़ा वाला 3 पे है, यानी कि शॉर्ट हैंड इज ऑन 2 एंड द लॉन्ग हैंड इज ऑन 3. What will be the time? The time will be 2:15. Why 2:15? Because short hand is on 2 and the long hand is on 3. Therefore, the time will be 2:15. मतलब 2:15 हो रहा है, यानी कि 2 तो ऑलरेडी बज चुका है, लेकिन 2 बजने के बावजूद 15 मिनट और बीत चुका है, इसलिए हम लोग उसको कह रहे हैं कि 2:15 हो रहा है। एंड इन इंग्लिश वी कॉल 2:15 or 2:15. Now, if the long hand is on 4, means minute hand is on 4 and the short hand is on 2, so what will be the time? The time will be 20:02. 20:02 means 2:20 हो चुका है। Likewise, if the short hand is on 25, means 5, and the long hand is on 2, the time will be what? 25:02, यानी कि 2:25 बीत चुका है। अब इसी तरह अगर बड़ा वाला hand, means if long hand or minute hand is on 6 and the short hand is in between 2 and 3, because as this hand is moving, this is also moving. So if the short hand is in between 2 and 3 and the long hand is in 6, so what will be the time? 2:30. Why 2:30? क्योंकि अब 2:30 हो चुका है। 2:30 means 30 minutes. तो 2:30 हो चुका है, और इस क्लॉक का हाफ पोर्शन ये मिनट हैंड कवर कर चुका है, इसलिए 2:30. अब आप समझे 2:30 क्यों? क्योंकि देखिए ये वाला इतना, ये फुल सर्किल है, ये इतना पोर्शन। फॉर एग्जाम्पल आप एक रोटी ले लीजिए, हम लोगों की मम्मी यहाँ रोटी बनाती है ना, तो रोटी कैसे रहता है? व्हाट इज द शेप ऑफ अ रोटी? व्हाट इज द शेप ऑफ चपाती? द शेप ऑफ द चपाती इज सर्किल। अगर आपकी मम्मी ने जो चपाती बनाया या रोटी बनाया, उसका शेप क्या होता है? सर्किल। सर्किल का मतलब क्या होता है? कि गोल। आपकी मम्मी की, हम लोग ने वो वाला सुना भी है ना कि मम्मी की रोटी गोल गोल। उसी तरह
मम्मी ने जो रोटी बनाया वो गोल रोटी बनाया। अब मम्मी ने एक रोटी आपको दिया। अब आप लोग 4 लोग हैं, यानी कि मम्मी, पापा, आप और आपकी सिस्टर, यानी कि 4 लोग हैं। अब आप वो 4 पीस कैसे करेंगे, क्योंकि आपके पास तो सिर्फ एक ही रोटी है। अब आप 4 लोगों में कैसे देंगे? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक रोटी को पहले फोल्ड कर देंगे। पहले आप उसको फोल्ड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। हाफ हो जाएगा, हाफ को करके फिर फोल्ड करके उसको ब्रेक करेंगे तो वो 4 पीस हो जाएगा। सो इफ दिस पोर्शन, सपोज कि ये पूरा एक रोटी है, ये पूरा एक रोटी है, इसका 4 पार्ट कर दे। इतना एक मम्मी को दे दिए, फिर इतना पोर्शन पापा को दे दिए, फिर इतना पोर्शन सिस्टर को दे दिए, और फिर इतना पोर्शन हम दे दिए खुद को, क्योंकि मुझे भी तो खाना है। तो क्या हुआ, एक रोटी को हम लोग कितना डिवाइड किए, 4, क्योंकि हम लोग 4 लोग थे। सो उसी तरह एक क्लॉक को हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। तो जिससे हम लोग को क्या मिलता है, फर्स्ट मिलता है 15 मिनट अगर पास कर दिया तो उसको कहते हैं क्वार्टर पास्ट। 15 मिनट मीन्स 15 मिनट पास्ट। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं पास्ट और 2 लिखा हुआ है। यहाँ मैंने जो क्लॉक बनाया है इसके बीच में मैंने से डिवीजन दिया है। एक तरफ मैंने राइट हैंड साइड में लिखा है पास्ट और लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है 2। तो राइट हैंड साइड में मैंने पास्ट लिखा और लेफ्ट हैंड साइड में 2 क्यों लिखा? पास्ट मीन्स इतना बीत चुका है और 2 मीन्स इतना होने वाला है। सो quarter past means 15 minutes is already passed and half past means 30 minutes already passed. Now quarter 2 minute means quarter 2 मतलब कि 15 मिनट अभी बचा हुआ है, 15 मिनट अभी बाकी है। So quarter 2 means 15 minutes is left. And now what do you mean by o'clock? O'clock is very easy. Anyone can answer. Even a 2 years child can also say that o'clock means, suppose if our hand is on 1 and the long hand is on 12, the time is 1 o'clock or 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock and 12 o'clock. Now, so 15 minute means quarter past. If 15 minute past means quarter past. If 30 minute past means half past. If 45 minutes past or 15 minutes left, 45 minutes past, we can call this one in 2 ways. Like 45 minutes past or quarter 2. Means over here 45 minutes past means 1 past 45 minutes or quarter 2 means 15 minutes left for being 2. यानी कि हम इसको 2 तरह से बोल सकते हैं। अगर सपोज कीजिए कि आपका शॉर्ट हैंड जो है 1 और 2 के बीच में है और लॉन्ग हैंड जो है 9 की तरफ में है, तो हम लोगों का टाइम क्या होगा? टाइम होगा, या तो हम लोग इसको 2 तरह से बोल सकते हैं कि 1 past 45 minutes, यानी कि 1:45 मिनट्स हो रहा है, या तो फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं quarter to 2, यानी कि 2 बजने को 15 मिनट बाकी है। तो आप लोगों को समझ में आया कि मैं क्या कह रही हूं? Now children, tell me what is the time? What you can see in this clock? What is the time now? The time is quarter to 2. Why quarter to 2? क्योंकि 2 बजने को 15 मिनट बाकी है। उसी तरह अगर ये ऐसा हो जाएगा, छोटा वाला जो हैंड है मीन शॉर्ट हैंड इज ऑन 2 एंड द लॉन्ग हैंड इज ऑन 12, द टाइम इज 2 o'clock. अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ, क्योंकि मैंने आपको ये पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन क्वेश्चन पूछने से पहले चलिए हम लोग रिवाइज करते हैं कि हम लोगों ने आज क्या सीखा है। उसके बाद फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगी जिसका रिप्लाई आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर देंगे। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है या कोई भी क्वेरीज है, प्लीज आस्क मी, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। सो नाउ ये एक का मतलब क्या होता है? व्हाट इज दिस?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका मतलब क्या होता है? ये 1 2 3 4 5 6 क्या है? ये सब क्या है? मिनट्स है। ये इतना मिनट्स है। 1 means 5 minutes, 2 means 10 minutes. Why? 5 plus 5 is 10. 3 means 15 minutes. Why? 10 plus 5 is 15. 4 means 20 minutes. 15 plus 5 is 20. 5 means 25 minutes. 20 plus 5 is 25 minutes. 6 means 30 minutes. Why? 25 plus 5 is 30 minutes. Now 7 means 35 minutes. Why 35? 30 plus 5 is 35 minutes. 8 means 40 minutes. Why? 35 plus 5 is 40 minutes. 9 means 45 minutes. Why 45 minutes? 40 plus 5 is 45 minutes. 10 means 50 minutes. Why 50? 45 plus 5 is 50. 11 means 55 minutes. 55 minutes means 50 plus 5 is 55. And 12 means 60 minutes. 55 plus 5 is 60. So 60 minutes make 1 hour. So suppose our short hand is on 3 and the long hand is on 12. The time is 3 o'clock. If the short hand is on 3 and the long hand is on 2, the time is 3:10 or 10 past 3. Suppose if the short hand is on 8 and the long hand is on 12, so the time is 8 o'clock. Or if the short hand is in between 8 and 9 and the long hand is on 9, the time will be 8:45. Why? 15 minutes is left to 9. So the time is 8:45. So now this is a homework for you. Now tell me, I'm just giving you time. If the short hand is on 10 and the long hand is on 12, so the time is what? Please write in comment section. I will ask 10 questions. First question is, if the short hand is on 10 and the long hand is on 12, what will be the time? Please write in the comment section. Suppose if short hand is on 1 and the long hand is on 3, so what will be the time? The second question is, if the short hand is on 1 and the long hand is on 3, what will be the time? Suppose if short hand is on 5 and the long hand is on 4, what will be the time? Third question is, if the short hand is on 5 and the long hand is on 4, what will be the time? Suppose if the short hand is in between 7 and 8 and the long hand is on 11, what will be the time? Fifth question, if the short hand is on 10 and the long hand is on 3, what will be the time? Sixth question, if the short hand is on 9 and the long hand is on 6, what will be the time? Seventh question, if the short hand is on 11 and the long hand is on 9, what is the time? Eighth question, question number 8, if the short hand is on 12 and the long hand is on 12, what will be the time? Question number 9, if the short hand is on 7 and the long hand is on 8, what will be the time? Last but not the least, if the short hand is on 6 and the long hand is also on 6, what will be the time? So, if you like this video, please like, subscribe, and please do share this with your friend. And if you have any queries, please reply. I will definitely help you. Thank you.